Assalamu alaikum, dear friends and students. How are you? I hope you will be fine. I am Mubashir from Multi Learning Platform. Our today's discussion is consistent a biological topic, and this is the most important topic. I think that our life is due to this thing on the earth, which thing I will discuss in the today's topic. Dear students, I will discuss about leaf structure in today's topic, such as you know that leaf is an organ of plant, is a part of the plant, and it is the part of shoot system or aerial portion of the plants. When we study that life is an organ of plant which is a part of shoot system or aerial portion. Aerial portion or shoot system means on the upper side of the earth. On the upper side of the earth, as we know that there are two systems. One is known as root system and one is known as shoot system. Root system is underground and shoot system is on the earth. In this way, this is the organ of plant which includes in the shoot system or aerial portion. It is the most important part of plant because it is the base. It is the source of photosynthesis, due to which plants make their own food and also provide the food to other animals, to other living things. Therefore, it is the most important part of the plant because without this part, the plants are not important and they cannot play a vital role in the life of other living things or animals. Because when we see that leaf is the factory of food. Leaf is the factory of food. Leaf makes food through the photosynthesis. Therefore, it is the most important part of plant. If we see it, we come to know that it is essential for the life of plants because through it plants can make their food and also make the food for the animals and other living things. Such as life of a plant depends on it because it is the organ of plant through which plant prepares its food. As we have discussed that plant can make their food through the leaf by the process of photosynthesis, and the leaf is known as the factory of food through which food is made. In this way, the structure of leaf is given below. प्यारे दोस्तों, तालिब इल्मों, मैं मोहम्मद मुबशिर अपने YouTube चैनल मल्टी लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ आज जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, ये बायोलॉजी का टॉपिक है और बहुत ही अहम चीज़ है। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा प्लांट ऑर्गन, एक ऐसा प्लांट पार्ट जिसके तहत, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी इस कायनात के अंदर अपने वजूद को बरकरार रखती है। और वो जो चीज़ है, वो जो पार्ट है, वो जो ऑर्गन है ऑफ प्लांट, वो पत्ता है। पत्ता। अब पत्ता एक ऐसी चीज़ है, आप लोगों को अभी भी मैंने बताया है कि पत्ता जो है ये शूट सिस्टम का एक हिस्सा है। शूट सिस्टम और इट मे बी नोन एज एरियल पोर्शन। शूट सिस्टम और एरियल पोर्शन ये क्या होता है? अगर हम देखें ना, फर्ज किया हमारे पास अगर एक पौधा है, तो फर्ज किया ये अगर हम लोग सपोज करते हैं ये अर्थ है, तो अर्थ के नीचे वाली साइड को हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग देखें, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ प्लांट, this is a tree or this is a plant. We divide this tree or plant into two portions. One is known as aerial or shoot system, aerial portion, and other one is known as underground portion. And we can see that
लीफ इज द पार्ट ऑफ एरियल पोर्शन। लीफ उस हिस्सा है, उस पौधे के उस हिस्से का एक ऐसा समझे कि रुकन है जो कि क्या है, जमीन से ऊपर है, जेरे जमीन नहीं है, जमीन के ऊपर है। तो इसी तरह यहाँ पे मैं बात करूंगा कि ये जो है ये शूट सिस्टम या एरियल पोर्शन का बहुत अहम हिस्सा है। अगर हम लोग देखें तो इसके बगैर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी आपको बताया है कि पौधे जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस का मेन जो ऐसा समझे जो पार्ट है प्लांट का वो क्या है, वो हमारे पास है लीफ। और ये जो लीफ है हम लोग देखेंगे, टोटल डिस्क्राइब करेंगे इस चीज को, मुकम्मल तौर पे बयान करेंगे कि कैसे इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, कौन कौन सी इसके पास ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए सूटेबल हैं। तो इसी तरह पत्ते अगर खुराक तैयार ना करें तो हम लोग देखेंगे कि पौधों के साथ साथ जानवर भी मर जाएंगे। पौधे तो खुद अपनी तैयार खुराक नहीं कर सकेंगे तो दूसरों को कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग जो ये जो पत्ते हैं ना, हमारे पास पत्ता है, पत्ते हैं, इनको जो है ना पौधों की खुराक की फैक्ट्री भी बोला जाता है, बिकॉज द फूड इज मेकिंग इन लीव्स, क्योंकि खुराक जो बनती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए पत्तों के अंदर बनती है। तो इसी तरह अगर पत्ते ना हो, पत्ते खत्म हो जाएं, हम अगर इनकी अहमियत की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि इन्हीं के साथ साथ पौधे भी खत्म हो जाएंगे और इन्हीं के साथ साथ क्या खत्म हो जाएगा, जानवर भी खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अब हम बात करते हैं इसकी साख्त की, पत्ते की स्ट्रक्चर की। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये मैंने एक पत्ता बनाया हुआ है, ये एक पत्ता है हमारे पास, एक प्लांट का एक लीफ है, उसकी ये डायग्राम मैंने शो की है। इसके बाद मैं इसकी इंटरनल डायग्राम जो है ना, एनाटोमी, इसको मैं एनाटोमी भी कह सकता हूं कि एनाटोमी ऑफ लीफ, एनाटोमी ऑफ लीफ, एनाटोमी ऑफ लीफ मीन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। When we discuss internal structure of leaf, we can see various things, various structures, various parts of a leaf. In this way, you can see that there is an upper portion, there is an upper portion and a lower portion. These both things are same. This is also epidermis and this is also epidermis. This one is known as upper epidermis and this one is known as lower epidermis. When we talk about internal structure or anatomy of a leaf, first of all we can see that there is an external, most external and most external. ये यहाँ पे ये सबसे बाहर वाली साख्त है हमारे पास यहाँ पे ये सबसे बाहर वाली साख्त है। तो ये हमारे पास एपिडर्मिस है, ये हमारे पास एपिडर्मिस है, बट दिस वन इज नोन एज अपर एपिडर्मिस एंड दिस वन इज नोन एज लोअर एपिडर्मिस। इसको हम लोग बलाई एपिडर्मिस भी कहते हैं और इसको हम लोग जीरी एपिडर्मिस भी बोलते हैं। इन दिस वे व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ आफ्टर द एपिडर्मिस, वी सी द मेसोफिल सेल्स, we see the mesophyll cells and remember that these are the cells which carry chlorophyll. अगर हम लोग एपिडर्मिस के बाद देखें तो हमें ये नजर आती हैं, ये पूरी लाइन है आप लोगों के पास, ये नीचे भी पूरी लाइन है जो कि अटैच है किसके साथ, एपिडर्मिस के साथ, लोअर और अपर एपिडर्मिस के साथ, एंड दीज आर नोन एज मेसोफिल सेल्स, और ये हमारे पास मेसोफिल सेल्स हैं। इसी तरीके से if we further see, then we conclude that behind, at the front of these mesophyll cells, there are also other mesophyll cells. But remember that these mesophyll cells and these mesophyll cells are of various categories. These mesophyll cells are known as palisade mesophyll, and these mesophyll cells are known as spongy mesophyll. They are known as spongy mesophyll, but this one and this one, all these are mesophyll cells are known as palisade mesophyll cells. इसी तरीके से प्यारे दोस्तों और तालिब इल्मों, अगर हम देखें
तो जो एपिडर्मिस के साथ अटैच हैं हमारे मीजोफिल सेल्स, इनको बोला जाता है पैलिसैड मीजोफिल, पैलिसैड मीजोफिल सेल्स। अगर हम लोग देखें जो दरमियान वाले हैं मीजोफिल, जो कि क्या हैं कि खोखले की तरह के हैं, मतलब कि उनके दरमियान खाली जगह हैं, ज्यादा आपस में वो कंपैक्ट नहीं हुए, करीब करीब नहीं है, जुड़े हुए मोस्टली नहीं है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी स्पेसेस हैं इनके दरमियान, तो दीज आर नोन एज स्पॉन्जी मीजोफिल। ये मैंने इनको नाम दिया है, स्पॉन्जी है ये, बट दिस वन एंड दिस वन आर नोन एज पैलिसैड मीजोफिल सेल्स। इसी तरह when we further see, we see the air spaces between the spongy mesophyll cells। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के दरमियान हम लोग क्या देखते हैं, हमें हवा, एयर स्पेसेस, हवा के लिए खाली जगह महसूस होती हैं, हम लोग देखते हैं। एंड एट द सेंटर ऑफ द लीफ स्ट्रक्चर वी सी द वस्कुलर बंडल। अगर हम लोग इसके मरकज में देखते हैं तो हमें वस्कुलर बंडल मिलता है। वस्कुलर बंडल मीन्स gathering of xylem and phloem cells, xylem and phloem cells। when we talk about xylem cells, xylem and phloem cells, when we talk about xylem cells, xylem are the cells which carry or transport the water and salts throughout the body of plant। when we see phloem cells transport the food throughout the body of the plant। इन दिस वे, यहाँ पे मरकज में डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मरकज में हमारे पास वस्कुलर बंडल है। वस्कुलर बंडल में दो चीजें हमारे पास, जाइलम और फ्लोएम सेल्स। जाइलम सेल्स जो है इनका काम है पौधे के पूरे जिस्म के अंदर पानी और नमकियात की फराहमी करना, और जो हमारे पास फ्लोएम है, फ्लोएम का काम है पौधे के पूरे जिस्म के अंदर खुराक की फराहमी करना। तो देखें साफ जाहिर है जो हमारे पास जाइलम है उनका काम होगा कि पौधे की जड़ों से पानी और नमकियात को लेके पौधे की टॉप तक पहुंचाना, और जो इट्स मीन के फ्रॉम द रूट सिस्टम टुवर्ड्स द शूट सिस्टम। बट व्हेन वी सी द फ्लोएम, तो हम ये देखते हैं कि जो फ्लोएम सेल्स हैं उनका काम है पौधे के शूट सिस्टम से, पौधे के एरियल पोर्शन से तैयार की हुई खुराक को पूरे एरियल पोर्शन में भी सप्लाई करना, और उसी के साथ साथ जो उसका अंडरग्राउंड पोर्शन है, इट्स मीन रूट सिस्टम है, उसकी भी खुराक क्या करना, प्रोवाइड करना। इसी तरह अगर हम बात करें, ये तो हमारी होगी स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, एपिडर्मिस देखी, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। मेसोफिल सेल्स देखे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेसोफिल सेल्स, वन इज नोन एज स्पॉन्जी मेसोफिल एंड अदर इज नोन एज पैलिसैड मेसोफिल। तो जो एपिडर्मिस अटैच्ड, द मेसोफिल सेल्स व्हिच आर अटैच्ड टू द एपिडर्मिस आर नोन एज पैलिसैड मेसोफिल, and the mesophyll cells which are interconnected are occupy the space between the palisade mesophyll cells, layers of palisade mesophyll cells, they are known as spongy mesophills, and they are exist the air spaces. Due to this reason they are also known as spongy mesophyll cells। इसी तरह हमने क्या देखा, हमारे पास एपिडर्मिस है, स्पॉन्जी पैलिसैड मेसोफिल है, स्पॉन्जी मेसोफिल है, इनके दरमियान में एयर स्पेसेस हैं, ये सारे के सारे एयर स्पेसेस हैं, मैंने इधर इनको मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग देखें अगर, तो ये एक सुराख मैंने रखा है, और ये वाला एक सुराख, ये वाले नीचे दो सुराख मैंने ये रखे हैं। तो ये जो चीजें हैं इनको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। द होल्स विच द पोर्स, the holes are pores which are present in the upper epidermis and lower epidermis are known as stomata, but they are mostly occupy the lower epidermis, they are mostly present in the lower epidermis, not mostly in the upper epidermis, they are mostly found, they are mostly occupy the place in lower epidermis and these are also known as stomata। These holes, these pores are known as stomata। In this way, if we talk about work of various parts of leaf, अगर हम लोग ये जो जितने भी हिस्से हमने इसके डिस्कस किए हैं, अगर हम लोग इनके काम को देखें, हिस्सों के काम को, तो कुछ यूं है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेसोफिल सेल्स की। मेसोफिल सेल्स कैप्चर लाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। As you can see that I have made a special structure in the mesophyll cells।
All these are chlorophyll, which are present in the chloroplast. In this way, due to the presence of chlorophyll in the mesophyll cells, they capture the sunlight. Because as we know that the plants gain green color due to presence of chlorophyll, and they can also capture sunlight due to the presence of chlorophyll. After this, stomata. Stomata are these holes. This one is, and both are these. These holes are known as stomata, source of exchange of respiratory gases. Through the stomata, plants can exchange respiratory gases. स्टोमेटा के जरिए क्या होता है कि जो हमारे पास पौधे हैं ये क्या कर सकते हैं, जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनमें से एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है, CO2 प्लस एंड O2। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करते हैं कि ये जो पौधे हैं वो इनटेक करते हैं, और जो ऑक्सीजन है और इनटेक करने के बाद ये क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, इसको इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। इसी तरह अगर हम लोग देखें ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन क्या है, फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है और ये उसको बाहर क्या कर देते हैं, खारिज कर देते हैं इन द एनवायरनमेंट फॉर द यूज ऑफ एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स। तो ये जो तबादला होता है हमारे पास गैसेस का, ये किसके जरिए होता है, स्टोमेटा के जरिए होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे तो हमारे there are vascular bundles, and vascular bundles consist of two types of tissues which are known as xylem and phloem. Xylem and phloem. In this way, as we have earlier discussed, that xylem transport water and salts throughout the body and phloem transport the food throughout the body of the plant. In this way, if we talk about vascular bundle, so we will see there are two types of cells which earlier I have discussed about them. After this, we will discuss about epidermis. Epidermis is the outermost external and internal structure of the plant's leaf, and it has two categories. It is of two types, lower epidermis and upper epidermis. Epidermis source of protection for leaf structure. कि हमारे पास जो लीफ की मुकम्मल साख्त है उसकी हिफाजत कौन करता है, एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, mesophyll cells due to the presence of chlorophyll capture the sunlight, and the sunlight which is transmitted from sun towards the leaves of the plants, almost 99% of the light is reflected and only 1% of the light is absorbed. This is point to be noted. In this way, we have discussed all the written material which is written here, and God willing, in the next topic we will talk about photosynthesis, the food making process of the plants. In this way, if you want to see all my videos lecture on my YouTube channel multi learning platform, then subscribe and like and press the bell icon of my channel so that you can easily receive all my videos lectures. In this way, I want to say goodbye. God willing, we will soon meet in next upcoming videos lecture which is about photosynthesis.